Hello everyone, welcome back to our channel Curious Quotient. So guys, if you are new to this channel, please consider subscribing this channel and press the bell icon for not missing any single update in this channel. So in the today's video, I will cover one of the most important topic of the Code of Criminal Procedure 1973, that is difference between section 161 and section 164 of the Criminal Procedure Code. So basically section 161 deals with examination of witness by the police. So the examination of witness by the police under the provision of the Code of Criminal Procedure is one of the most important stage in the criminal justice system, which helps in settling the case and punishing the criminals. Thus, during a examination of the witness, the police take the person's statement in order to proceed further during the investigation system. And for after receiving, as we all know that after receiving any information of the commission of any cognizable offense and under section 154 of the CRPC, uh, after the police officer the lodge an FIR, and after that it starts investigation. So for the purpose of investigation under section 160 of the CRPC, power has been given to the police officer to require the attendance of the witness. And for fulfilling the attendance of the witness, there are certain conditions which is required to be fulfilled. That is, first one is the police officer need to send a written order requiring the attendance, and that must be in a written form. So next one is the person whose attendance is required, he must appear to be acquainted with the facts as well as circumstances of the case. So जब भी हम लोग किसी विटनेस को बुलाते हैं, जब मतलब पुलिस जब बुलाते हैं किसी भी विटनेस को, या फिर एक्यूज पर्सन को या फिर कोई विक्टिम को, तब कुछ कंडीशंस है वो एट द बैक ऑफ द माइंड कंसिडर करना पड़ता है, और दैट मस्ट बी फुलफिल्ड. आफ्टर दैट सेक्शन 161 का प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो बेसिकली 160 में दिया हुआ है कि पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. तो ये पावर जो पुलिस ऑफिसर के पास है, ये कुछ ही कंडीशंस में ही फुलफ़िल होगा. फर्स्ट वन इज़ जैसे अटेंडेंस रिटन फॉर्म में होना पड़ेगा, जो ऑर्डर है उसका वो ऑर्डर रिटन फॉर्म में होना पड़ेगा. नेक्स्ट वन है कि पर्सन जिसके अटेंडेंस की बात हो रही है, तो उस इंसान को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पता होना चाहिए जिस केस के लिए पुलिस ऑफिसर ने उसको नोटिस भेजा है. नेक्स्ट वन, द पर्सन जिसको भी बुलाया गया है उसका एज 15 ईयर्स से कम और 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आदमी के केसेस में. और वुमेन को तो हम बुलाया भी नहीं जा सकता किसी भी प्लेसेस में, और मेंटली और फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन को भी नहीं बुलाया जा सकता. सो ये जो लोग हैं जैसे स्पेशल कैटेगरी के लोग और जैसे वुमेन, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, और जो भी मैन जिनका एज मेल मेंबर्स जिनका एज 15 ईयर्स से कम और 65 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उनको उनके रेसिडेंस में ही उनका स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस आ सकता है. बट किसी और दूसरे प्लेस में या फिर पुलिस कस्टडी में नहीं बुलाया जा सकता. सो ये जो प्रोविज़न है वो 2013 में ऐड हुआ आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. और दूसरी बात है कि जो पर्सन जिसको नोटिस भेजा जा रहा है अटेंडेंस के लिए, he must reside within the limit of the police station of investigating office of a police officer or adjoining police station.
सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू फुलफिल। नेक्स्ट वन इज, अगर बाई चांस अगर जिस इंसान को बुलाया जा रहा है वो इंटेंशनली ओमिट करे अटेंडेंस के लिए, तो एक्शन क्या लिया जा सकता है कि नहीं। तो यस, एक्शन सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में ये जो सेक्शन है वो बेसिकली उसके साथ डील करता है कि इन केस कोई पब्लिक सर्वेंट किसी इंसान को बुलाता है कि उसके अटेंडेंस के लिए, अगर वो आप फुलफ़िल ना करो तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। सो नेक्स्ट वन इज सेक्शन 161. इट बेसिकली डील्स विथ oral examination of witness by the police officer. So the police officer or the investigating officer acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and in such case the person must have to answer all the questions relating to the case put to him. But in case the any question is asked, the answer of which have the tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture, he can remain silent in that question. जैसे कि बोला है कि 160 में अटेंडेंस की बात करी है विटनेस की, तो 161 में उसका मेन पर्पस दिखाया गया है, क्यों 160 में क्यों विटनेस को बुलाया जाएगा। तो मेन पर्पस है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पुलिस ऑफिसर, ताकि एविडेंस कलेक्ट किया जा सके और उस एविडेंस को कलेक्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए ट्रायल के दौरान, आइदर इन द सेशन कोर्ट्स ट्रायल और इन द वारंट ट्रायल केसेस और व्हाट एवर मैटर। और जो पुलिस ऑफिसर है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो जो उस पर्सन जिसको बुलाया गया है अटेंडेंस में उसको ऑरली एग्जामिन करेगा, क्वेश्चंस पूछेंगे। द क्वेश्चन में बी इन द फॉर्म ऑफ एनी क्वेश्चन एंड आंसर, कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है पुलिस ऑफिसर, उसका आंसर देना पड़ेगा जिस विटनेस को पूछा जा रहा है। एंड द थिंग इज दैट द विटनेस इज बाउंड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इन केस कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया विटनेस को जिसके आंसर से विटनेस खुद फंस सकता है, या फिर ऐसा कोई चांसेस है कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज हो सकता है और या फिर पेनलाइज हो सकता है, तब इन दैट केस विटनेस के पास पावर है, अपॉर्चुनिटी है कि वो साइलेंट रहे और उसका आंसर ना दे। फर्दर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन हैव द अथॉरिटी कि वो रिटन फॉर्म में वो जो स्टेटमेंट लिया गया है विटनेस का उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करे, बट प्रोवाइडेड दैट ही हैव टू मेक ए सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ सच स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं one of the most important part, that the statement recorded by the police during the investigation under section 161 is neither taken on oath nor is tested by the cross examination. So basically ये स्टेटमेंट क्यों बोला गया है, मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि इसका एविडेंटरी वैल्यू के जानने के लिए कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर लेता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161, इट इज़ उसका कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। सो एट द रिज़ल्ट वो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम भी यूज़ नहीं किया जा सकता और कोई दूसरे पर्पस के लिए ट्रायल में या फिर इंक्वायरी के लिए वो यूज़ नहीं किया जा सकता। सो 162 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 161। सो बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ 161 इज़ टू प्रोड्यूस एट द ट्रायल, produce the evidence at the trial. In case of session trials or warrant trials, the charge may be made on the basis of the statement recorded under section 161. So
Even in the case of Nandini Satpathy versus PL Dhani, Supreme Court has said that the area covered by Article 20, Clause 3 and Section 161, Clause 2 is substantially same, and Section 161, Clause 2 is parliamentary clause on the constitutional issue. So the investigating officer is required to make a separate and true record of the statement of each person whose statement he records. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक्शन 162 के बारे में, जहाँ बोलते हैं कि व्हाट इज़ द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 161 टू द पुलिस ऑफिसर. So as per section 162, it provides that no statement made by a person to a police officer in the course of a investigation shall be reduced to writing, be signed by that person making it. So 162 यही बात करता है कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर लेता है 161 के दौरान किसी भी विटनेस से, और उस कभी कभार उससे रिटन में फॉर्म कन्वर्ट करता है वो स्टेटमेंट को अपने पुलिस डायरी में या फिर किसी सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, तो वो स्टेटमेंट लेने के टाइम बाद उसमें कोई सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है. जिस विटनेस का स्टेटमेंट लिया गया है उसका कोई सिग्नेचर नहीं चाहिए, बिकॉज इसका कोई एविडेंटरी वैल्यू है ही नहीं. इसलिए फर्दर it is required to be mentioned that no such statement or record or any part of such statement can be used for any purpose in any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement are made. So such statement cannot be considered to be a substantive value. So such इस ऐसे स्टेटमेंट का कोई एविडेंस हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है और उसको एविडेंस माना भी नहीं जाता. रीज़न इज़ बिकॉज दैट कि पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट लिया है उस स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं माना जाता. फर्दर सेक्शन 162 Clause 1 lays down certain circumstances whereby the statement can be used for limited purposes. So if the witness is called as prosecution witness, or the statement has been reduced into writing or has been proved in whatever manner may be, it can be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such statement of the witness in the manner provided under section 145 of the Evidence Act. So यहाँ एक प्रोवाइज़ो की बात कर रहा है सेक्शन 162 में, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि 161 का स्टेटमेंट को किसी इंक्वायरी या ट्रायल में यूज़ नहीं किया जा सकता, इसका कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है. बट सेक्शन 162 क्लॉज 1 ये एक प्रोवाइज़ो मेंशन है. आप अगर BR एक्ट आपके पास है तो आप देख सकते हैं, जिसमें इसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि जो स्टेटमेंट है उसका एक लिमिटेड स्कोप भी है. जैसे कि कभी कभार प्रोसिक्यूशन के लिए जब विटनेस को का स्टेटमेंट लिया जाता है 161 में, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन के फेवर में वो कोई स्टेटमेंट पुलिस को दे. बट ड्यूरिंग द ट्रायल जब वो स्टेटमेंट अगर प्रूफ हो जाए और ट्रायल के दौरान अगर उसका स्टेटमेंट अगर फिर से चेंज हो जाए, तभी प्रोसिक्यूशन उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है कि पहले तो आपने पुलिस के सामने ये ऐसा वैसा स्टेटमेंट दिया था, आप ट्रायल में उसका स्टेटमेंट फिर से चेंज हो रहा है. तो इन दैट केस द विटनेस कैन बी कंसिडर्ड एज ए हॉस्टाइल विटनेस, जिसका कोई वैल्यू ना हो, मतलब एविडेंस का कोई वैल्यू ना हो, जिसके स्टेटमेंट को आप कोर्ट कंसिडर ना कर सके. सो उसे हॉस्टाइल विटनेस कहा जाएगा. और इन मेनी टाइम्स एक्यूज्ड भी उस स्टेटमेंट जिसके विटनेस के स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी. सो
In order to attract the proviso, certain conditions is required to be fulfilled. That is, first one is the witness must have been called by the prosecution. Next, again, the witness must have made a statement to the police officer under section 161 of the CRPC, and again, such statement must have been reduced into writing under section 161 clause 3 of CRPC, and such statement must have been proved. Further, section 162 doesn't affect the provisions of section 27 and section 32 of the Indian Evidence Act. So section 27 किस चीज़ के बारे में बात करता है? वहाँ बात करता है कि हमें फॉर एग्जांपल कोई भी कन्फेशन अगर कोई पुलिस वाले के सामने कोई इंसान कोई अक्यूज्ड देता है, तो उसका हमें पता है कि उसका कोई एविडेंशियरी वैल्यू है नहीं. ओनली मजिस्ट्रेट के सामने कोई कन्फेशन का वैल्यू ही उसको एविडेंस के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है. लेकिन पुलिस के सामने कोई अगर कोई स्टेटमेंट देता है, कोई कन्फेशन करता है कोई अक्यूज्ड की उसने ये क्राइम क्लियर करा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता ट्रायल के दौरान. बट उस कोई भी कन्फेशन देते टाइम अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन वो दे जिससे पुलिस वाले को उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट लेके कुछ नया कुछ एविडेंस डिस्कवर करने को मिलता है. फॉर एग्जांपल, एक्यूज्ड कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है कि उसने कोई इंसान का मर्डर करके या फिर उसको मर्डर करके उसका बॉडी कहीं भी छुपा के रखा, वो पर्टिकुलर प्लेस में या फिर पर्टिकुलर जगह में उसने कोई इंसिडेंट किया है, कोई क्राइम कोई ऑफेंस किया है. इन दैट केस और पुलिस वहाँ जाके कुछ बॉडी या कुछ एनीथिंग लाइक दैट और एनी कोई एविडेंस कलेक्ट करता है, तो उस एविडेंस का वैल्यू है ऑब्वियसली, बट नॉट द कन्फेशन. सो कन्फेशन का कोई वैल्यू नहीं होता कि अगर वो एक्यूज कोई उसका अपना खुद का क्राइम गिल्टी प्ली करता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता. सो दिस सेक्शन प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ द स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पज ऑफ corroboration. सो एज यू ऑल नो कि यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ की बात करते थे. फर्स्ट वन इज़ तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सो इस केस में ऐसा हुआ कि कोर्ट ने अल्टीमेटली कुछ ओमिशन किया कि जो सिग्निफिकेंट ओमिशन किया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि कोई स्टेटमेंट है एक इंसान ने दिया था जिसका उसने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ही उसने मिस किया था पुलिस को बोलने के दौरान इन्वेस्टिगेशन के टाइम. सो वो जो स्टेटमेंट उसने मिस किया था, वो स्टेटमेंट को ट्रायल के दौरान और इंक्वायरी के कोर्ट में एक्यूज्ड ने कॉन्ट्रडिक्शन के लिए वो स्टेटमेंट को लिया और उससे क्रॉस किया, मतलब प्रोसिक्यूशन के विटनेस को. सो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक्यूज्ड एज वेल एज द जो प्रोसिक्यूशन है वो ड्यूरिंग देयर क्रॉस एग्जामिनेशन वो कोरोबोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए 161 का स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं. अगेन इन द केस ऑफ रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की बहुत इम्पोर्टेंट केस लॉ है. आप लोग एक बार पढ़िए अगर हो सके तो विजिट एक बार चेक करिए ये वाला केस लॉ इंडियन कानून में, अगर वो पूरा जजमेंट मिलता है तो एक बार पढ़ लीजिएगा. सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 162 इज limited in its scope to the use of the parties only, and it cannot be used for any other purpose. For example, in trial, or it has no value in the eye of law. Next, I will
like to discuss in detail section 164 of the Code of Criminal Procedure, which talks about recording of the confessions and statement made by any person before the magistrate. Okay, so the metropolitan or the judicial magistrate who is having the jurisdiction or not can record the confession or statement in the course of investigation and after any time but before the commencement of the trial or inquiry, uh, and he can record such confession of the accused or the statement or the victim under section 164 of the CRPC. But the police officer to whom the power of the magistrate has been conferred, he cannot record the confession or the statement under section 164 of the CRPC. Further, such statement recorded under section 164 can be used at the stage of trial for contradiction, for corroboration, and for cross examination. And the confession recorded under this section are considered to be a substantive piece of evidence, and conviction can be based on such confession by the court. Now, the question arises, what is the manner of recording confession? So, before discussing this important topic, I would like to let you know who shall record the statements and the confessions under section 164 of the CRPC. So, according to section 164 CRPC, a statement or a confession can be recorded only by a metropolitan magistrate or the judicial magistrate who is having jurisdiction or not. It doesn't matter whether he is having jurisdiction or not, because it is this stage is before the commencement of the trial. So the 164 section 164 CRPC is a stage under the investigation period. So it can be the confession or the statement can be recorded by any magistrate having jurisdiction or not. So let us talk in detail who the manner of recording the confession. So before recording any confession, the magistrate is required to explain the person making the confession that he is not bound to make such confession. Further, if he does so, it may be used as an evidence against him. And the most important thing is that the magistrate cannot merely sign a printed instruction supplied to him. This will be a violative of this section. The confession which was made voluntarily and recorded correctly in a different language can be said to have amounted to an irregularity. The entire confession must be brought on record. The confession must be shown to be voluntary before it, and it can be acted upon. Now, that it is necessary that the confession should be signed by the accused, and if it is not, it will not be admissible in evidence. So the commission would not vitality the confession, and the irregularity is curable under section 463. So before discussing the topic, that is the manner of recording of the statement other than confession, so I would like to discuss in detail what is the procedure of recording the confession by the magistrate. So after giving a warning to the person making confession, the magistrate should give him adequate time to think and reflect, so that his mind is free from any kind of possible police influence or pressure. Further inquiry must be made from the accused as to the custody from which he was produced and the treatment had been receiving in such custody. If the marks of injuries are found on the accused, he should be asked
from where he has received all these things. Further, if the person is coming from the police custody before recording confession, normally he should be sent to um, the jail. uh, he should be sent to a judicial custody or jail instead of the police custody. Further, if the accused is handcuffed, the magistrate should order to remove the same, and the police officers who are likely to have an influence over the accused should be ordered out in order to um, create a free environment. Further, the confession of the accused should after the confession of the accused, he should be sent to the judicial custody, and on no account he should be returned to the police custody. One more important thing is that the accused should be assured of protection from the torture or pressure from the police officers or the like in cases he declines to make a statement. Moreover, Section 164 Clause 3 further prohibits the remand to the police custody of the accused if he expresses his unwillingness to make the confession while produced before the magistrate. Further, it is imperative for the magistrate to explain to the accused his constitutional right as provided under Article 22 of the Constitution. If the person is not willing to make a confession, the magistrate shall not authorize the detention of the such person in a police custody. Further, once Section 164 Clause V requires that the confession shall be recorded in the manner provided under Section 281 of the Code, so that the whole of the confession and the answers given by him shall be recorded in full in the language of the Code or in the language in which the accused has given confession. Moreover, the record shall be made without administering oath to the accused, and it must be read over him in the language which he understands. Further, such confession shall be signed by the accused, and the magistrate shall also prepare a memorandum of the substance of the confession and sign the same. After the confession is recorded, the magistrate shall send the record of the confession to the magistrate by whom the case is required to be inquired or tried. That is the entire process of recording the confession of the accused. Now let us talk in detail what is the manner of recording the statement other than the confession. So Section 164 Clause 5 lays down that any statement made under Section 164(1) not being a confession shall be recorded in a manner provided for recording of evidence as is in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the state, and the magistrate shall have power to administer oath to the person making such statement. If the person is victim of rape or any other sexual offenses, then her statement shall be recorded forthwith in the manner provided under Section 164 Clause 5A of the Code of Criminal Procedure. So next one is the bar on the police pressure. So subsection 3 guarantee that the police pressure is not brought on the person who is unwilling to make a confession. When the accused was in judicial custody for more than 2 days prior to the giving of confession, it was held that the person is sufficient to shed fear and influence of the person, if any, and therefore the confession could be made voluntary by the accused. The interval between the preliminary questioning and the recording of the confession need not necessarily be 24 hours duration, and the confession was held not to be rejected merely because the magistrate has failed to assure that the accused that he would not be sent back to the police custody in the event of his failure of making his confession. Now let us talk about my observation in this case, in this matter, or so the statement, as you know, that the which is recorded under Section 164 of the Code of Criminal Procedure,
mainly deals with the statement of the witnesses by the magistrate before the magistrate, which is under this section, recorded under this section on oath. So the object of recording the statement is to preserve the evidence, to get the account of the testimony of the witness at the first instance and while it is still fresh, and to preserve retraction of the testimony at the later stage. Further, the statement recorded under Section 164 of the Code of Criminal Procedure 1973 can be used for the corroboration of the witness's testimony at the trial. Moreover, the application for the recording of the statement under this section is usually filed by the prosecution, and the magistrate shall be assured before recording the voluntariness of a confession made before the magistrate and are too well established for iteration. But in the matter of Section 161 CRPC, that is the statement of the witnesses before the police officer, the it has the statement of the which is recorded by the police officer, it has no value while the trial, and in and for that reason it is given under Section 162 CRPC that the witnesses has is not required to provide signature uh, in the um, in the copy in which the statement of the witnesses was recorded in the written form. It also further stated that the statement recorded by the police officer during the investigation is neither given on oath or is or neither it is tested by the cross examination, and such for that reason such statement cannot be considered to be a substantive piece of evidence. And many times the reason of this is that the many times it has been found that the um, for the police officer, due to their pressure on the for investigation and to provide evidence or to collect evidence or uh, to provide report to the police magistrate within a certain period of time related to any cognizable or non cognizable offense related to the investigation. They usually pressure any person who is not related to any commission of any crimes in order to, and as a result many times many innocent peoples suffer from the pressure of the police officer. And with this I would like to conclude the today's video. If you are new to this channel, please don't forget to subscribe it and share it to your friends. I hope this video will be helpful for you guys, and in the next video I will cover section a detailed analysis of Section 167 of the Code of Criminal Procedure. So, and as promised earlier, in this channel I will cover next important legal GK from January to 2023 to August 2023 of this year, and this video will be very important for those who are preparing for CLAT 2024, then judiciary and other competitive law exams. So please subscribe the channel and stay tuned.